Aren't you just tired of watching videos of people telling you, hey, start a business, man. Hey, you need this to start a business, man. You don't need that to start a business, man. And just speaking vague jargon that sounds good on paper but just doesn't make much practical sense. They just continue repeating, hey, keep hustling, passive income, investing strategy. भाई ठीक है कर लेंगे हसल यार, बट क्या होता है हसलिंग, कहाँ मिलता है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कोर्स है, आखिर कहना क्या चाहते हो? आधी बात बता के सब अपने कोर्सेज बेचने पे आ जाते हैं. Well, today that ends. I'm going to start a business right in front of you, step by step with no steps skipped. जीरो से हम स्टार्ट करेंगे और फिर देखते हैं कहाँ तक जाता है या फिर कहाँ तक नहीं जाता है. अब ये मैं एक वीडियो में नहीं कर पाऊंगा unless वो वीडियो 2 घंटे का हो, एंड एज YouTube tells me most of you leave before the first 3 minutes anyway, so what's the point? So ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस होने वाली है जिनको देखने के बाद आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ऑफ हाउ यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम योर होम इन इंडिया. आई एम गोइंग टू टेक कैंडल्स एज एन एग्जांपल, बट फॉर यू द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस. You can make soaps, cosmetics, धूप, अगरबत्ती, अचार, whatever it is that you want to make. Also goes without saying I don't have an MBA. This is my creative process and I'm sharing it for entertainment purposes only. बाद में मेरे पास मत आना कि यार तूने पैसा डुबा दिया. If you don't want to miss the next parts of this video, hit the subscribe button right now and let's get into it. जब भी मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, I like to work in 4 steps: brainstorming, learning, creating, and my favorite, JMM, which is shorthand for just make money. So first step, brainstorming. इस step के end तक I want to have some idea of what I want to do and why I want to do it. So why do I want to start a candle business? You know, बचपन से ही मुझे कैंडल्स बनाने का बहुत शौक था. And I traveled to Romania, Belgium, Russia, France in search of the most exquisite, refreshing and satisfying fragrances in the world. और सालों की मेहनत and research के बाद मैंने finally एक बहुत special candle recipe formulate करी है. And now I finally want to share it with the world. Yeah, that's a bunch of bullshit. Look, I'm not going to lie to you. The real reason why I want to start a candle business is A, I want to be a fucking billionaire, and B, all of my current businesses are location dependent. मेरे customers को physically मेरे restaurant तक आना पड़ता है हमारी super delicious crusty wood fired pizzas खाने के लिए, and they need to travel to रानीखेत to stay at my hotel. तो मेरे दिमाग में काफी टाइम से था कि एक location independent business start करते हैं, कुछ ऐसा जिसके लिए मेरे customers को मेहनत ना करनी पड़े, जो वो दुनिया में कहीं से भी घर बैठे बैठे ऑर्डर कर पाए. Why candles? Well, कुछ महीने पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक scented candle गिफ्ट करी थी, and it was a big surprise for me. See, I always liked candles. एक छोटी सी फ्लेम रूम में जल रही होती है तो I believe अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रूम में फ्लो करती है, बट मुझे ये नहीं पता था कि कैंडल्स सेंटेड भी आती हैं, and my mind was blown. अब उसे जलाओ और पूरा रूम खुशबू से भर जाता है. I was like, ये बढ़िया चीज़ है यार, चलो खूब सारी कैंडल्स ऑर्डर करते हैं. फिर मैंने देखा यार ये तो बहुत महंगी है. फिर मैंने सोचा चलो यार खूब सारी कैंडल्स खुद बना लेते हैं. And now that we know कि क्या करना है और क्यों करना है, we move on to the next phase. Step 2, learning. Have you watched Breaking Bad? If you haven't, well, what the fuck are you doing? Stop watching this shit. Go watch that first. Well, if you have watched the show, how many tries does it take Walter White to cook his first batch of crystal meth? He literally cooks it perfectly on his first try in the first episode, right? Wrong. It takes him decades of learning, studying everything there is about chemistry and mastering his craft behind the scenes before he's able to cook his first batch perfectly on the first try on screen. And that's exactly what I'm going to do, except instead of chemistry, I'm going to learn everything I can about candles, candle science, candle making, and instead of crystal meth I'm going to cook, well, candles. अब ये learning वाला जो step है ये कभी खत्म नहीं होता है. In fact, it is actually the longest step in the process, and I believe most of the learning is not even done in the learning phase. Most of the learning is actually done in the creating and making money phase. So when do you stop? Well, as soon as you believe you have enough knowledge to create a MVP, a minimum वायबल प्रोडक्ट. मैंने MVP के बारे में अपनी पिछली वीडियोस में भी बात करी है. बेसिकली द पॉइंट बीइंग कि आपका प्रोडक्ट कभी परफेक्ट नहीं होगा, लीस्ट ऑफ ऑल बस थ्योरी पढ़ के. एक अच्छी कैंडल बनाने के लिए मुझे कैंडल्स बनाने के बारे में पढ़ने से ज्यादा कैंडल्स बनाना चालू करने की जरूरत है. बट कैंडल्स बनाना स्टार्ट करने से पहले आई नीड टू हैव द आंसर्स टू सम की क्वेश्चंस, व्हिच आर व्हाट डू आई नीड टू मेक अ सेंटेड कैंडल, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए मुझे, हाउ टू मेक अ सेंटेड कैंडल, रेसिपी क्या होती है, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ सेंटेड कैंडल, कितने का बिकेगा, कितने का मुझे पड़ेगा, हाउ मच एम आई विलिंग to invest in the project, what are the realistic returns I can expect on that investment. Actually मुझे कितना इन्वेस्ट करना है वो डिसाइड करने से पहले मुझे कितना रिटर्न चाहिए वो डिसाइड कर लेना ज्यादा पसंद है. Because starting a business, especially a retail business, will always require an investment. All those people who would tell you otherwise are fucking lying. Business start करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बस जिगरा होना चाहिए. क्यों नहीं चाहिए भाई? रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाओगे? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ?
But here's the good part. You can reduce the amount of money you want to invest by reducing the amount of money you want to make. अगर मुझे कैंडल्स बेच के 1 लाख रुपीज़ कमाने हैं, थ्रू माई रिसर्च आई फाउंड आउट सेंटेड कैंडल्स में ऑन एवरेज 40% का प्रॉफिट मार्जिन होता है, विच मीन्स मुझे 2.5 लाख रुपीज़ वर्थ ऑफ कैंडल्स बेचनी पड़ेंगी, जिनको बनाने के लिए मुझे 1.5 लाख रुपीज़ अपने कैंडल बिजनेस में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, विच ऑल्सो मीन्स कि मुझे 1.5 लाख रुपीज़ का रिस्क लेना पड़ेगा. बट अगर मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर लेता हूँ, लेट्स से मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे बस 10,000 रुपीज़ कमाने हैं, दैट वुड मीन मुझे बस 25,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ कैंडल सेल करनी है, जिनको बनाने के लिए मुझे सिर्फ 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं और बस 15,000 का रिस्क लेना है, विच मेक्स अ लॉट मोर सेंस कंसिडरिंग मैंने कभी कैंडल्स बनाई नहीं है एंड देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि मैं फकअप कर दूँ और कैंडल्स बना भी ना पाऊँ. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस. यू कैन स्टार्ट स्मॉल एंड यू कैन ऑलवेज गो बिग लेटर ऑन. एक बार आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल जाए, यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट मोर मनी इन द फ्यूचर. Best of all, you can reinvest your profits back into the business and grow slowly but surely. So after weeks of learning, here are some key things I've learned about scented candles. The main ingredient is, well, no surprises, wax. There are hundreds of kinds of waxes, but for our purposes, there are mainly 3. Soy wax, which is made from soya beans, beeswax, which is made by, well, bees, and paraffin wax, which is a byproduct of the petroleum industry. Second main ingredient is fragrance oil. बेसिक कैंडल साइंस, आप वैक्स लेते हो और आप एक फ्रेग्रेंस ऑयल लेते हो और उनको एक रेशियो में ब्लेंड कर देते हो. फ्रेग्रेंस ऑयल ज़्यादा डल गया तो वैक्स उसे होल्ड नहीं कर पाएगा एंड कैंडल लीक कर जाएगी, और अगर फ्रेग्रेंस ऑयल कम डाला तो कैंडल वोंट स्मेल एज स्ट्रॉन्ग एज इट कुड. एवरी वैक्स हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. फॉर एग्जाम्पल, सोय वैक्स होल्ड फ्रेग्रेंस ऑयल वेरी वेल बट इट डज नॉट हैव अ गुड सेंट थ्रो, एंड पैराफिन वैक्स ऑन द अदर हैंड हैज द बेस्ट सेंट थ्रो बट इट डज नॉट होल्ड ऑयल वेरी वेल. एंड बीज वैक्स इज द क्लीनेस्ट बर्निंग वैक्स बट इट ऑल्सो बर्न्स द हॉटेस्ट. एंड सिंस मैं ऐसे ग्लास जार्स में कैंडल्स pour करने का प्लान कर रहा हूँ, burning beeswax might actually break the glass. Then finally comes the wick. अब wicks के साथ भी अलग ड्रामा है. Depending on the dimensions and the make of the wick, every wick has a different burning temperature, which needs to be paired with the wax. अगर wick बहुत high temperature पे जलेगी तो कंटेनर में एक wax pool बन जाएगा, which will drown out the candle. अगर wick low temperature पे burn करेगी तो heat पूरी candle तक नहीं पहुंचेगी and candle ऐसे tunnel करने लग जाएगी. And in the end काफी सारी wax waste चली जाएगी. So yeah, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. लर्निंग स्टेप के एंड तक मैंने एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ सप्लाईज भी बना ली है, विच कंटेन्स एवरी लिटिल थिंग आई विल रिक्वायर. वैक्स एंड फ्रेग्रेंस ऑयल से लेकर सिजर्स, थर्मोमीटर, बर्तन सब इस लिस्ट में डाल दिए. एंड दिस लिस्ट इज गोइंग टू बी क्रूशियल इन द नेक्स्ट फेज, क्रिएटिंग, विच इज द मोस्ट फन एंड ऑल्सो द मोस्ट अनोइंग फेज. क्रिएटिंग फेज में हम स्टार्ट करेंगे इस लिस्ट के हर एक आइटम के लिए एक वेंडर ढूंढने से. फिर हम वेंडर्स को ऑर्डर्स प्लेस करेंगे एंड फाइनली सारा सामान आ जाने के बाद हम कैंडल्स बनाना शुरू करेंगे. बट फॉर दैट यू विल हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट video. So subscribe, hit the notification bell and also follow me on Instagram to stay updated. I'll catch you in the next one. Cheers.